Honorable dignitaries, distinguished guests, faculty members, and dear students, greetings for the day to everyone present here. Today, on behalf of CU Jammu fraternity, I, Dr. Shelly Sehgal, feel privileged to welcome you all to this International Youth Day celebrations being organized by the Red Ribbon Club and the Office of Dean Student Welfare, Central University of Jammu. International Youth Day is a special day celebrated around the globe. This day is like a big bright spotlight shining on the initiatives, potential, and energy of the young people. Ladies and gentlemen, our culture has taught us to start our day and any new task with the blessings of God. I therefore request the dignitaries on the dais to please come forward for the ceremonial lamp lighting. In the presence of this lamp, let us invoke the blessings and prosperity into our hearts. Thank you, sir. As we embark this incredible event, may I now request Professor Yashwant Singh, the Registrar, Central University of Jammu, to accord a formal welcome to the guests. Honorable Ambassador G. Parthasarathi, Chancellor of the University, Chief Guest of the event, Honorable Vice Chancellor Professor Sanjeev Jain, esteemed guest present on the dais, Shri Madan Lal Ji, JKS, Deputy Director of Finance, Shri Rahul Gupta Ji, JKS, District Social Welfare Officer, Ramban, Jammu and Kashmir, respected deans of the various schools, head of the departments, faculty members, officers, staff members, my dear student, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you on this auspicious occasion of International Youth Day. We are truly honored to have with us today a distinguished personality, the Chancellor of our university, Ambassador G. Parthasarathi. Welcome, sir. International Youth Day is a celebration of the power and potential of young people worldwide. It is a day that recognizes their immense contribution to society and their capacity to shape a brighter future for all of us. We are gathered here today to celebrate their energy, creativity, and passion for the positive change. We are doubly fortunate to have Honorable Chancellor Sir among us, a visionary leader who has played a pivotal role in guiding our institutions toward excellence. Ambassador G. Parthasarathi has not only been an
advocate for the education, but also beacon for inspirations for countless young minds. As we embark on this day's proceedings, let us remember that the youths are not just for the leaders of tomorrow, but the torchbearer for today. Their ideas, their innovations, and their determination will undoubtedly pave the way for more inclusive, sustainable, and prosperous world. I would also utilize this platform to thank and welcome our own Honorable Vice Chancellor Sir, who have extended unconditional support and encouragement to organize such an international events in the university, which has been of the tremendous help in achieving our goals in terms of research and academics. Once again, a warm welcome to each and every one of you. Let us come together to celebrate the potential of our youth and to embrace the promise of bright future. Thank you and very warm welcome one and all present over here. Jai Hind. Thank you, sir. As an expression of our affection and reverence, I request our Honorable Vice Chancellor, Professor Sanjeev Jain, to accord a floral welcome to the Chief Guest, Ambassador G. Prathasarathy, Honorable Chancellor, Central University of Jammu. Thank you, sir. I also request Vice Chancellor Sir to extend a cordial welcome to the guest of honor, Shri Madan Lal, JKS, Deputy Director Finance, JNK AIDS Control Society, and to Shri Rahul Gupta, JKS, District Social Welfare Officer, Ramban. Thank you, sir. May I now request the Registrar, Professor Yashwant Singh, to present a bouquet to Professor Sanjeev Jain, Honorable Vice Chancellor, Central University of Jammu, who is the driving force behind the event. Thank you, sir. I now request Professor Ritu Bakshi, Dean Student Welfare, to accord a floral welcome to Professor Yashwant Singh. Thank you, sir, for all the support. Thank you. May I now request Dr. Vinay Kumar, Nodal Officer, Red Ribbon Club and Associate Dean Student Welfare, Central University of Jammu, to apprise us about the proceedings of today's event. Thank you, Dr. Sally. Very warm good morning to all of you. We all know that youth are the asset of any nation. And today, Central University of Jammu is organizing International Youth Day with the theme, Building Our Youth for a Sustainable World. We have an expert panel also today, sir, in the plenary session. They will be deliberating on the role of youth in dealing with drugs. We have an expert panel. They are going to talk about palliative care. They are going to talk about HIV/AIDS, and also we have teachers and faculty members who are going to talk about environmental concerns of youth and how they are going to deal with to make a sustainable future. The Youth Day is celebrated across the globe every year, and this year the theme was how to build a sustainable world. In this regard, the Red Ribbon Club is organizing awareness camps. We are also working on skill development of youth towards sustainable living and sustainable environment building, and also making them aware about drugs and how to deal with drug issues across their groups and peer groups. So this is what we have thought of doing so today, and thank you so much. Thank you, sir. On this momentous occasion, it is a proud and privilege to welcome Professor Sanjeev Jain, Honorable Vice Chancellor, who is the motivator and facilitator and stands tall among the galore of educationists for his presidential address. Thank you.
आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम्बेसडर जी पार्थसारथी जी, ऑनरेबल चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, श्री मदन लाल जी, श्री राहुल गुप्ता जी, यशवंत जी और सामने बैठे हुए फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ। आज जो है हम अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल यूथ डे मना रहे हैं और अवसर पर आज हमें काफी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे आदरणीय चांसलर जी पार्थसारथी जी भी आज यहाँ पर उपस्थित। जितने पिछले 2 साल से मैं सर से जुड़ता हूँ, रेगुलरली बात भी करता हूँ, सर की जो नॉलेज की डाइवर्सिटी है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, और बहुत ही विशाल है। आप किसी भी टॉपिक में सर से बात करिए, सर को डेट वाइज, लोकेशन वाइज और नाम के साथ सब चीजें याद। सर इज नियर अबाउट 83 और 84, बट जो उनका विजन है और जो शार्पनेस है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। तो वाकई में मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि जो है आज सर ने जो है हमारे यहाँ टाइम निकाला और इस कार्यक्रम में उपस्थित। जहाँ तक कि मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू की बात करूं, यहाँ पर मैं देखता हूं कि रोज ही कोई ना कोई कार्यक्रम होता है और ये जो हॉल है इसमें कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं। कल ही जो है मैं देख रहा था, यशवंत जी और उनकी टीम ने जो है जो हमारा स्पोर्ट एक्टिविटीज है साल भर में जो होती है गतिविधि, उसमें बड़े बढ़ चढ़कर जो है बच्चों ने हिस्सा लिया। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा यूथ जो है एक नई दिशा में आगे जा रहा है, जो देश के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो यूथ है ये अमृत काल में जो है इसको सब कुछ करना है और ये बड़ा मतलब एक स्वर्णिम काल है जहाँ पर कि जो बहुत सी फैसिलिटीज जो पूरे पुराने लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थी वो आज जो है इस अमृत काल में उपलब्ध है। उन सबका जो है मैं एक अपने यूथ जो बैठे हुए हैं, मेरे छात्र लोग बैठे हुए हैं, उनसे एक ही बात को अनुरोध करता हूँ कि जो एक फैसिलिटी अवेलेबल है उसको आप यूज करते हुए आगे बढ़े और इस देश के लिए आप कैसे कार्य कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम जो कार्य करते हैं वो इस देश के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि यदि आपको कोई अपॉर्चुनिटी है आप बाहर नहीं जाएं, पर आज की डेट में जो जिस हिसाब से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारा देश में विकास हो रहा है, हमारे युवाओं के लिए स्टार्टअप और भी कई चीजें उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से मैं यही चाहता हूं कि हमारा यूथ यहीं पर रहे और इस देश के लिए कार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सोचनीय विषय है। दूसरा जो है, मैं एक चीज और है जो आज हमारा जो रेड रिबन क्लब है जो एड्स वगैरह के लिए कार्य करता है और भी चीजों के लिए कार्य करते हैं, वो इरेडिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जो है बच्चे जो कार्य कर रहे हैं वाकई में बहुत सराहनीय है, क्योंकि जो एड्स से पीड़ित हैं वही उसका दुख दर्द समझ सकते हैं और आप उनको सिर्फ जो है संवेदना ही दे सकते। तो जो संवेदना है वो भी बहुत आवश्यक है और वो हम उन चीजों से कैसे दूर रहें, हम ड्रग्स से कैसे दूर रहें, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो जो है उस ड्रग्स से दूर नहीं हो पाते। तो मैं सभी युवाओं से एक ही बात कहूंगा कि आप जो है ये ड्रग्स है और भी जो बुराई है, सामाजिक बुराई है, उनसे आप दूर रहें कि जिससे ये अच्छे नागरिक बन सके जिसकी इस देश को अत्यंत आवश्यकता है। इसी बात को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत जय। Thank you, sir. Now is the time to express our sincere gratitude to our esteemed guests. With immense exultation, I request Honorable Vice Chancellor, sir, to present a token of respect and admiration to our revered Chief Guest, sir. So, please.
big round of applause, please. Thank you, sir. May I now request you, sir, to kindly present a memento to the guest of honor, Shri Madan Lal, JKS, Deputy Director Finance, JNK AIDS Control Society. Thank you, sir. I may again request you to present a memento to Shri Rahul Gupta, JKS, District Social Welfare Officer, Ramban. Thank you, sir. May I now request Professor Yashwant Singh, the Registrar, to kindly present a memento to Shri Rishish Khajuria, Assistant Director, IEC, JNK AIDS Control Society. Thank you, sir. Kindly present a memento to Shri Rajesh Sharma, Assistant Director, Youth Affairs, JNK AIDS Control Society. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, it is now the time for the keynote address, a moment that promises to set the tone for today's event. I'm profusely elated to welcome our chief guest, the man of distinct vision and a fountainhead of knowledge, experience, and inspiration to all of us, Ambassador G. Prathasarathi, who is also the Honorable Chancellor of Central University of Jammu. Please, sir. आदरणीय वाइस चांसलर संजीव जैन जी और यहाँ उपस्थित हमारे जो मेहमान हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका स्वागत करता हूँ। और मेरे तो आदत हिंदी तो बोल लेता हूँ, लेकिन भाषण देने में इसलिए आपको अनुमति से मैं जो एड्रेस है वो अंग्रेजी में दूंगा और राष्ट्रभाषा को मैं आदर करता हूँ और राष्ट्रभाषा मैं सीखा मैंने दिल्ली में नहीं, तमिलनाडु में। Well, Vice Chancellor and friends, I am delighted to be here on such an occasion when we are discussing some of the serious issues which we face. But since I've got an opportunity to meet the youth, there are a few points I want to make, which I have done in all my service, first in the army here and then in the foreign service abroad. And what does India stand for? What is Bharat Mata? I'll give you one example. Never in human history, anywhere, have so many people with 14 national languages speaking and studying in different languages, working in different states. Never in human history have such a large number of people, now close to 2 billion, live together homogeneously in one country. Never. It's happening why. So, to my young friends, we are a passing generation. All I would like to say is to carry forward the values enshrined in our hearts. And if you want to go into paper,
in our constitution. I think every one of you should study the constitution because that gives you the entire functioning of India. We have welcomed and absorbed various religions, Hinduism, Jainism, and Buddhism, born in India. We have absorbed religions from the Middle East, or what we call as the Semitic religions. But we have lived together in harmony in one country. Never has this happened anywhere in the world. And we have done it now already for over 7 decades, 8 decades now. This is what should really motivate you in looking ahead. And I think the Vice Chancellor, I've known now for some time, we all have, are happy to have a person who stands by and cherishes these values. It does not matter कि देश के किस हिस्सा से हैं, आपकी संस्कृति जो आप समझते हैं वो एक भारतीय संस्कृति के अंदर है, लेकिन अनेकता में एकता जो हमारे देश में है दुनिया में और कहीं नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए लड़ाई हो रही है इजराइल और अरबों के बीच और हंगामा मच रहा है देश के अंदर। ये भारत में नहीं होता। हम सब एकत्रित हैं जहां तक हमारी विदेश नीति है, जहां तक देश की सुरक्षा के लिए। So I think I am addressing a group of students who should get a bit of idea of what the world is all about. Right now, you are living through a period of huge technological change. What you invent today can be obsolete tomorrow. And you succeed when what you produce has a long life and serves a lot of people. And in India, I think what has happened in this diversity, I said, is we have grown in different rates of economic growth, but we have all lived together as one nation. People go from one corner of India to the other, they are welcome with open arms. We have, as I said, produced our own indigenous religions. They've grown here, and we've learned to absorb others without discrimination. And the first document I would urge my young students to study as again is the Constitution of India. The people who drafted it, it was drafting committed just after Mahatma Gandhi was assassinated. Embodies the values of he was universally regarded, he is universally regarded as the father of our nation, who won us our independence. And I think you have to look forward to that. And I just want to give you some idea of the complex world we live in. Right now, you are living in a world of rapidly expanding technology. You should be prepared for that. Change is going to now be much faster in the world than anywhere else. You would have seen that in your work styles, the equipment available for you to work, the way your programs function. But bear in mind, the old thinking of looking back कि हमारे दादा परदादा ने ये किया, जरूर उसका आदर कीजिए, but look ahead. That is the main message. And with regard to India, I think you can be proud. You just now seen the developments in Israel and all countries in that region
are fighting each other among other reasons on religious grounds. I must tell you that even in our conflicts with Pakistan, and I have lived a long time there, we never looked at it as a conflict of religions. It was a conflict of people who were disillusioned and couldn't have a democracy in their own country, making claims which have led to conflict. But at the same time, we have also formed associations you can be proud of. It started with the South Asian Association, with the result that India and all its neighbors, except Pakistan, is not following it, but with regard to India, all live in a free trade area. And Europe keeps boasting about it. But the number of people who live here under such a system is at least 3 or 4 times the size of Europe. And when you talk of Bharat Mata, you talk of certain ideals of the past, which we observed, say, from the days of Ashoka here, or the Chola Empire in the south. These are values we have imbibed, which tie us to our country. It does not matter what caste you are, what religion you are Indians first. That will be a message I hope you young people will convey to each other and learn from. As I said, you have a vice chancellor who's an embodiment of those values, and it's been a pleasure working with the vice chancellor. But these are values we stand for. What Jammu University stands for. What historically Jammu has been, like the rest of India. So, I go back to the Anekta Mekta. It is on the values which Mahatma Gandhi gave. Few points on modern India. We are rapidly changing. We have been the fastest growing country for the last decade in the world. I mean, everybody seems to forget this. In the world, we have consistently for almost a decade been the fastest growing economy. भूल जाते हैं कोई शर्मिंदा की जरूरत नहीं है आप वॉशिंगटन में जाइए सर चाय रखिए और कहिए कि भाई आपकी जो आर्थिक तरक्की है 2% है हमारी 6 है. So this is the sort of. I'm not saying you have to run down anybody else, but there is much you can be proud of. And you as a generation are going to see technology change, lifestyles change, lives change much faster than my generation, the Vice Chancellor generation, all the staff has grown. Today's practices 1 month from now are good, perhaps to be irrelevant. That is the pace. And what I would like to do in discussions here and indeed throughout your education is bear this in mind. Anekta Mekta and progress economically. Progress economically also means not just the rich growing richer and the poor living wherever they are. I think we have worked out an equitable system where if you go for the election mode, everyone is saying कि वो आप 50 रुपया दे रहा है हम तो आपको 100 रुपया देंगे. It's not politics. It's people concentrating on their welfare and on the welfare of society. So I had not come prepared to deliver this address here, but nevertheless, being amongst young students, I have my grandkids who are studying in colleges either here or the United States. To that generation, I would say, just keep it up. Just remember one thing. 50 years ago, we were almost starving. We used to live
with food from America. In fact, rations could not be distributed till you know when the next wheat ship was arriving. I'm talking of the 1960s. Look at that and look at today when India is exporting food. We have the largest and the best source of preservation. इस देश में भूखे मरते थे. We, as an independent India, have said never again, and we have succeeded. So I think there's much to be proud of, but much to be done. Particularly, I would say, we should forget considerations which separate us, caste, creed, religion, whatever, and learn to be good Hindustani. That is what I would suggest, and I would like the Vice Chancellor and others. He has been particularly good to me because I ended my education in 1962 or 62 and then moved on in life. But he has given a new source of inspiration in an educational institution, which for various reasons I have been given. But to have it in Jammu, just one more point to say. I used to be here in the army in the 1965 conflict. This area has a great history of service to Mother India, and you're lucky to be here. Thank you. Thank you, sir, for fueling our thoughts and inspiring our being. As rightly said by Prathasati sir, our Vice Chancellor indeed is an embodiment of golden virtues, and we are fortunate to work under his guidance. So, may I now request Shri Madan Lal ji, guest of honor, to kindly present a memento to our Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Sanjeev Jain. A big round of applause, please. We are celebrating Youth Day, and we should have the energy of the youth sitting in this auditorium. Thank you, sir. May I now request Shri Madan Lal ji again to present the memento to the Registrar, Professor Yashwant Singh, who is the driving force behind this event. A big round of applause, please. Thank you, sir. I again request you to kindly present a memento to the convener, Dr. Vinay, of today's event for his constant and untiring efforts to make the stage see the sunshine. Thank you, sir. May I now request Professor Ritu Bakshi, Dean Student Welfare, Central University of Jammu, to present the formal vote of thanks. सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो बधाई का पात्र है आज हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू का रेड रिबन क्लब, जिन्होंने आज इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है हमारे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में। तो बहुत एक जोरदार तालियां बनती हैं रेड रिबन क्लब केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के लिए। सबसे पहले मैं हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संजीव जैन की ओर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे कुलाधिपति, माननीय कुलाधिपति केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, एम्बेसडर श्री जी पाथा सारथी जी का, कि उन्होंने अपने इतने व्यस्तता से के समय में यहाँ पर आकर आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और सर हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि हमारे माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में इस तरह के कार्यक्रम, जैसा कि कुलपति महोदय ने अभी बताया भी है कि ऑडिटोरियम हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम करवाता रहता है। तो इस तरह के कार्यक्रम हमारे युवाओं में एनर्जी लाने के लिए और उनको एक दिशा देने के लिए, दिशा
प्रदान करने के लिए बहुत से कार्यक्रम में इन युवाओं को एंगेज करके रखता है। और इसी कड़ी में अभी जो एक रिसेंट में आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, यूटी फाउंडेशन डे हमारा जम्मू कश्मीर में मनाया गया था, जिसके तहत यहाँ से कुछ छात्रों ने बाहर इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था। और इसमें अभी कल ही जो रिजल्ट आया है उसमें रिया चौधरी ऐसे कंपटीशन में इंटर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट प्राइज लेकर आई हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की ओर से। और वंश पटियाल जी हैं बीटेक ईसी कोर्स से, और ये वीडियोग्राफी में सेकंड प्राइज लेके आए हैं अपने यूटी फाउंडेशन डे में इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में। इसके साथ ही सर हमारे एक छात्र अभी विज्ञान भवन दिल्ली में, आज उनका वहां पर वक्तव्य है प्रजातंत्र का, कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से। आज वो फाइनल में पहुंचे हैं 4 राउंड्स के बाद, तो वो भी आज वहां पर अपना वहां पर अपनी यूनिवर्सिटी की प्रस्तुति दे रहे हैं, उसकी तरफ से भी है। और इस तरह के कार्यक्रम हम अपनी यूनिवर्सिटी में करते ही रहते हैं। और जैसा कि सर ने साझा किया, इस समय हमारी 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट भी चल रही है डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की ओर से, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मीनिंगफुली एंगेज रहें अलग अलग कार्यक्रमों में। सर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे माननीय कुलपति महोदय जी का, जो अपने मार्गदर्शन में हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ श्री मदन लाल जी, JKAS डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस, JKACS। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। श्री राहुल गुप्ता जी, JKAS डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर रामबन JNK। और हमारे साथ यहाँ रेड रिबन क्लब की ओर से जो भी गेस्ट आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में आने के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे रजिस्ट्रार सर प्रोफेसर यशवंत सिंह जी, जिनकी मदद से और जिनकी बहुत ही प्रॉम्प्ट जो हमें एकदम से सपोर्ट देते हैं, उसकी वजह से हम ऐसे कार्यक्रम बहुत ही जल्दी में और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर कर लेते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सभी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद देती हूँ सभी डीन्स का, अलग अलग स्कूल्स के डीन्स यहाँ बैठे हैं जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है ऐसे कार्यक्रमों के लिए हमेशा ही। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। हमारे हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करने के लिए, ऐसे कार्यक्रमों में आने के लिए। हमारे फैकल्टी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है आज रेड रिबन क्लब का ये कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है डॉक्टर विनय जी के साथ मिलकर, तो ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारी टेक्निकल टीम, प्रणव जी बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मीडिया के लोग हैं, फोटोग्राफर हैं हमारे, हम सभी का धन्यवाद देते हैं। और सर ने जिस तरह से हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय जी ने बोला कि हमारा भारतवर्ष महान क्यों है, भारत महान क्यों है, इतनी विविधता लिए हम एक ही जगह एकत्रित रहते हैं। तो ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू है, ये भी एक तरह से बहुत सारे राज्यों से यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, तो ये अपने आप में एक छोटा भारत है। तो आप अपने लिए छात्र छात्राओं अपने लिए जरूर तालियां बजाइए और इस तरह की मीनिंगफुल एक्टिविटीज में हमेशा अपने आप को एंगेज रखिए, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ताकि आपके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं, जिसके लिए आपके सभी फैकल्टी मेंबर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी कोशिश से इसको बिल्कुल आगे आइए और हर एक कार्यक्रम में जोर शोर से भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। Thank you, ma'am. May I now request everyone to please rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता
भारत माता की जय, भारत माता की जय। Thank you. I request the dignitaries to kindly proceed to the committee room.